today I'm really excited और ये हमेशा मेरी opening lines होती है that I'm really excited. Actually, I'm really excited because after such a long break, रमजान के break के बाद, this is the first time I'm getting back to podcast. And as you all know that I enjoy this thing a lot because I get to talk to you guys and I get so many amazing women entrepreneurs on my podcast. And we talk about so many stuff. We can talk about like girl stuff and women to women, of course. At the same time, we talk about entrepreneurial journey and कहते हैं ना हमने काफी टाइम ले लिया ईद के बाद ही देर आई दुरुस्त आए बिकॉज आई हैव दिस अमेजिंग यंग एंटरप्रेन्योर विथ मी सेरिश रजा एंड शी इज द ओनर ऑफ बिजली नाम बहुत ही साउंड करता है बट इस नाम के पीछे क्या हिस्ट्री है एंड व्हाट एग्जैक्टली बिजली इज इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे लेकिन आपको हमेशा जो हमारे साथ लाइव रहना पड़ेगा वीकॉन के पेज पे फेसबुक हो गया इंस्टाग्राम हो गया लिंक्डइन हो गया और ट्विटर पे एंड ऑफ कोर्स यू कैन विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट weekon.pk and you can get to know what's happening in weekon क्योंकि आगे हम बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हम करने वाले ई बाजार तो आपने देख ही लिया एंड आगे जो है हम काफ़ी बाजार और भी करने वाले बट एनीवेज गेटिंग बैक टू सेरिश हाउ आर यू थैंक यू वेरी मच Hi, how are you? It's such an honor for me to be invited over here and share my experience with such amazing more entrepreneurs and I'm genuinely very excited and thank you for the invite. Thank you so much, and I'm really excited too because I have such very different kind of questions. And when I was reading your profile, I was like, "Whoa, she's different." Let's get her on. And I'm kind of scared too because you're doing a really big job. So tell me that how did this thing happen? Then you can tell me about the policies, and you can tell me that when did you want to when did you thought that भाई मुझे अब जो international जाना है और France जाना है. So last year I was looking for partners जो के fashion industry में जिनको knowledge हो who could help me grow in that particular field, right? क्योंकि eventually Bisbee है तो is a fashion related product. So Pakistan में fashion पे इतना focus नहीं होता in terms of startup. We are more towards different healthcare or education, and we have different departments that we focus on. So I started honestly Googling different accelerator programs on a global level जो कि इस चीज़ को support कर रहे हो. So I found क्योंकि Paris is the hub of fashion, right? Yeah, definitely. So there's an acceleration program over there which supports only fashion tech startups who are working on sustainability. So हमारा basically startup perfect fit वहाँ बैठा था and then because they had the knowledge so I felt like they were the best partners for me to help me grow in that market. उस time पे I was in the very initial stages of my business. So I applied over there. We were one of the only Pakistani startups in that particular program. Yeah. And with that incubation program, I started gaining my knowledge. So then I honestly realized कि जो sustainability aspect है of this business or in the fashion industry वो कितना बड़ा problem है on a global level. And इतनी efforts की to resolve it. So again फिर वहाँ पे मैं अभी तो I was in the recycling business. But when I started researching on their market, तो वो market में recycling और thrift shopping बहुत पुराना concept है. But post COVID वहाँ पे एक नया concept आया which is called upcycling, जो कि Gen Z में बहुत ज़्यादा famous हो गया. So upcycling is basically you take an old piece of clothing, for example, you have a white shirt, right? But आप तंग आ गए हो कि यार मैं ये white shirt कितनी दफा पहनूं, तो आप उसको कर दो या आप उस पे कोई motive लगा दो. कोई चीज फट गई है उसके ऊपर आप कोई कढ़ाई करवा दो and fix it, elongating the lifespan. तो ये एक upcycling new feature जो sustainable fashion ने introduce हुई in the global market, which I learned because I was getting knowledge from that incubation program. So in Paris जो है वो upcycling concept को promote करता है. So we are the pioneering marketplaces for upcycling in Paris. हमसे पहले अभी तक digital कोई भी ये ऑफर नहीं कर रहा था. अच्छा. So we're currently the pioneering marketplace for upcycling, particularly in France, in Paris actually at the moment. But we're planning to expand to firstly all of France and then to the UK. So that's our roadmap for Bisbee. So that's how I got into Paris and how I learned about the Parisian market and they're very because unki agar aap if you study their history, for them fashion is everything. Fashion is life for them. So logon ke liye wahan pe kapde, so clothes is a very important part of their lives and wearing and way of expression for them.
So upcycling again is a concept जो कि इसलिए Gen Z में बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि it's a way of expressing. आप एक ही चीज़ को लेके उसको अपना स्टाइल दे दो and वो एक चीज़ होगा which no one else will have, जिसकी वजह से it's very famous among that generation. So yeah, so that was our journey from Pakistan to Paris. Do you see a difference between like Pakistani consumers and French consumers? Like we are actually sometimes we are very impulsive buyers, sometimes especially कपड़ों के मामले में तो खातून पैसे हो या ना उधार पे भी कपड़े जरूर लेगी, so we are very impulsive. Like are those consumers very impulsive or not? They are smart buyers. We are impulsive buyers. I agree. They're smart buyers. Now, what they would do is, for example, अगर उन्होंने कोई महंगी चीज लेनी है ना अच्छी ब्रांड की, वो लेंगे and then they would sell it off. उन पैसों से फिर वो दोबारा एक सेकंड हैंड चीज लेंगे. They would sell it off. वहाँ पे थ्रिफ्ट शॉपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है. Okay. वो लोग लॉजिकली देखो, it makes logical sense. Even me as a consumer, for example, मैं 10,000 रुपए एक सूट पे खर्च करूं या 10,000 रुपए से मैं 4 कपड़े खरीदूं, तो there's a huge difference between the two. तो लोग इस तरह की लॉजिक बाइंग करते हैं. हम लोगों को यहाँ के कस्टमर्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हम लोग अभी तक बहुत inferior, it's like a complex set. People are not willing to accept buy second hand. अगर कोई खरीदेगा भी वो you would never bought second hand. तो वो एक टैबू है जो हम लोग ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं since the time we started. इसलिए अगर आप थोड़ी सी इमेज ब्रांड की देखेंगी तो इट्स फैशन ओरिएंटेड. हम प्राइस को इतना हाईलाइट नहीं करते या सस्ते कपड़े को हाईलाइट नहीं करते. वी हाईलाइट द फैशन एंड द क्लोथिंग एस्पेक्ट बिकॉज इवेंचुअली एक औरत की इम्पल्स वहीं आती है जब उसको कोई कपड़ा बड़ा अच्छा लगता है ना कि वो कहे कि यार बस ये मैंने वो आती वहीं से है. when she it's not the price particularly. जब उसको पसंद आ जाए वो 15,000 का भी ले लेगी. Exactly, like ऐसे उधार पे भी ले लीजिए, बस कपड़े कपड़े होते हैं हमारे लिए. Like you talked about taboo, कि यहाँ पे जो है especially अगर देखा जाए, अच्छा इन्होंने तो जो है ना if I use the completely क्योंकि हमारे if I use like you have come of course I'm sure this word that अच्छा इसने तो second hand के इतवार बाजार शायद खोला, because I've had a lot of friends जिन्होंने pre-love अभी उनका initially है. So I'm sure you did face such, अजीब लगता है कि भाई मैं इतना इन्वेस्ट कर रही हूँ. It's not like actually the second hand, इस पे काफी काम कर रहे हैं आप लोग, ड्राई क्लीन करते हैं, the way you display it, ऐसे नहीं उठा के पहना हुआ आप लोग दे देते हैं. I'm sure this hygiene का properly एक system होता होगा. So did you hear these kind of things, and if you have heard it, how did you come out of those? I heard बहुत ज़्यादा मैंने सुना. शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा everyone was like क्या कर रही हो like what is ये कोई काम है करने वाला etc etc. Again इतवार बाजार ज़्यादा मैंने लंडा सुना था. मैंने सबको definition लंडा मैंने बहुत लंडा फिर मैंने सबको definition समझाया. मैंने कहा लंडा is exports from London. I'm not getting clothes from London. I'm getting clothes from people's wardrobes. So वो खैर but I'm not fighting it. But यार मेरी किस्मत इस मामले में इसलिए अच्छी थी क्योंकि I've always been very thick-skinned from as a kid. मुझे कभी ज़्यादा लोगों की बातों से affect नहीं हुआ. If I wanted to do something या if I was into something तो कोई क्या कह रहा है, that never affected me since I was young. तो वो thick इस business particularly के लिए मुझे बहुत फायदा किया क्योंकि even my friends or like no circle wasn't willing to promote it or to accept it or to make because again they were ashamed of the fact but like very kind as consumers क्योंकि ये again आप बाहर जाओ तो अमीर से अमीर लोग यही करते हैं because again it's logical sense. I myself तो मुझे कुछ पसंद आता है तो I buy from. ये भी सवाल एक दफा मुझे आया था कि आप खुद कभी खरीदेंगी वहाँ से? Yeah, I do. I like something, I buy from it. Okay, it's coming back to the this जो business के perspective से अगर हम चीज़ों को देखें उस वक्त आपने personal काफी experience आपने share किया है और ये भी personal ही आपका experience होगा that what are the most effective ways to increase the traffic on your website? यार आजकल के ज़माने में I'll be very honest, so one of the most effective ways is to partner with influencers and then okay, so partner with influencers in a way कि जब वो push कर रहे हो ना उसी टाइम पे आपके अपने social पे भी वो message aggressively push हो रहा हो. That is the one thing जो कि
एक एक्सपोनेंशियल कस्टमर बेस लाती है. फिर इट्स ऑन यू कि आप रिटेन किस तरह करते हो अपने कस्टमर को. But to drive traffic in the current day and age, as much as I hate to say, influencers have a big part to play in it. Definitely, But yeah. influencers may be finding that क्योंकि सब ट्रैफिक तो ला देते हैं, मे बी एक्चुअल कस्टमर्स आपको नहीं ला के देते आपके बिजनेस के लिए. Be very smart in choosing the kind of. Okay, so tell me that this thing that आप जो है pre-loved कपड़े you sell it. So if you want to share how things work, is there an app like people approach you through that या किस तरह procedure जाता है? Like if I want to put my things on your website, so how would I do that? So it's a very simple process actually. For Android users, we have an app. So they can download the app and then directly start uploading the clothes. For other consumers, website पे there's a tab called how to sell. उस पे आप जाएंगे तो वो आपको कर देगा seller registration form. So you just have to register as a seller and then you can start uploading as many clothes as you want. फिर होता है ये once we find a buyer for your dress, वो हम आपको contact करते हैं and then we get the dress picked up from your home. वो हम अपने पास ship करते हैं, then we do run a quality check, clean it up, package it, and then we send it to the end buyer. And then once the dress reaches the end buyer, जिसको हम COD offer करते हैं, then we transfer money to the seller online. Okay, it's very बहुत ही clear process है. ऐसा नहीं कि हाँ, because people sometimes make it really hard to कि भाई अगर आपने भेजना है, there are a lot of women actresses जो आजकल pre-loved कपड़े अपने viewers को बताऊँ कि सिर्फ ये नहीं है, हम ऐसे आम लोग नहीं है, बड़े actors जो है अभी इस चीज को पैसे कमा रहे हैं like you said, there are a lot of space for different ideas as long as you want to do it like you did it. Okay, tell me, there are a lot of freelancers. Like, see, I'm talking about कि हर किस्म के लोग, हर किस्म की freelancing होती है, online e-commerce, e-marketing बहुत ज़्यादा है. So how would you differentiate Bizbee from all those other, you might say competitors, like you can say competitors? Yeah, so again, freelancers, I love that question. मुझे freelancers से what differentiates us is something जो कि जिसके लिए मैं शुरू में बड़ा लड़ी थी, which was on focusing on making a brand. उस टाइम पे मुझे सेल्स नहीं चाहिए थी. उस टाइम पे मैं अगर मेरी सेल्स लो भी होती थी तो मैं कहती थी कि मैंने अपना ब्रांड बनाना. मैंने ये नहीं करना कि मैं कहूँ कि अच्छा मैं 10 रुपए की चीज बेच रही हूँ, 5 रुपए की चीज बेच रही हूँ. मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मैं pre-loved good quality clothes बेच रही हूँ. Someone wants to buy it, good. Because मैंने ब्रांड पे और उस ट्रस्ट फैक्टर पे इतना फोकस किया सिंस द बिगिनिंग, इसलिए अब आई हैव कस्टमर्स जो कि इन्हीं फ्रीलांस ये इंस्टा पेजेस से अक्सर मुझे स्क्रीनशॉट्स लेके भेज रहे होते हैं कि कैन यू प्लीज बाय दिस फ्रॉम यू. मैं उनको कहती हूँ कि आई डोंट हैव दिस इन्वेंटरी, आपने कहीं और से उठाई है. तो वो उनका आगे से जवाब होता है, बट नो वी ट्रस्ट यू, वी डोंट ट्रस्ट देम, सो वी वांट टू बाय इट फ्रॉम यू. So Elias, we're very kind in that regard that we have been able to build a brand जिस पे लोगों को trust है. इतना एस्टैब्लिश अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है कि लोग इसको एज अ बिजनेस कंसिडर करते हैं एज कम्पेयर टू अदर फ्रीलांसर्स. एंड शुक्र है वी entered the market at a time where there were not a lot of competitors, so we have gotten to a point कि for a lot of people Bizbee is synonymous with second hand buying. When they think of second hand buying or selling, the first thing that comes to their mind is Bizbee. और अभी तक जो competitors से हमें लड़ना नहीं पड़ रहा वो इसी probably reason की वजह से है, because of that branding that we have been able to build in the minds of our customers. Okay, perfect. It was great talking to you, Sehrish, and I got a lot to learn, to be honest. तो मैं यहाँ पर ख़वातीन जिन्होंने ज्वाइन किया उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा. You have a great story, और जैसे आपने कहा है कि you are going international, it's a very big thing even for us going to international. लोग UK, US में जाते हैं, but going to France is like actually a big thing for us. So thank you very much. It was great talking to you, and I hope that जो आप चाह रही है वो करें और बाकी अपना ख्याल रखें, और जैसे आप कह रही है कि आपकी जो है ना तरक्की होती रहे. So we'll get back to you inshallah soon once you reach the big customers in France. Inshallah. So here, yeah, exactly. Take care, and guys, आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और क्योंकि टाइम ऐसा है and we don't want कि आप लोग हमेशा में फॉलो करें, लेकिन आप लोग की भी तरक्की होती रहे. So take care of all the SOPs and all the people, please take care of yourself, और खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिएगा. Thank you very much guys, और मैं आप लोगों को एक और एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीक ज्वाइन करूंगी. So take care, अल्लाह हाफिज़.